Hello students, our next chapter is Geography chapter number 2, Inside the Earth. In this particular chapter, we are going to learn about the internal composition of the Earth, means how many layers consist in the Earth and how different types of rocks formed in the lithosphere. First, we are going to learn about the introduction. Our Earth is constantly undergoing changes, but it is just impossible to obtain information regarding the interior of the crust as temperatures are very high. What is written down in this particular that our Earth is constantly changing, means in the lithosphere there are constant changes in the formation of land, but we cannot get the excess information about it because of the temperature inside the Earth. The temperature is very high. Now what is written down over here? Here is the information about the temperature. The heat increases as we go deeper at the rate of 1 degree Celsius for every 30 to 35 meters of descent. Means movement. जितना भी हम मूव करेंगे 30 to 35 meters, उतने डिस्टेंस में टेम्परेचर में कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा? तो 1 degree Celsius. We derived most of our facts from other related sources like the density of materials and the magnitude of earthquake waves. Now, how we get the information about the lithosphere, about the interior of the earth by the density of material, means how the material is weighted, how the materials in the form मेल्टेड फॉर्म में है, अगर कोई मटेरियल सॉलिड फॉर्म में है तो वो फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से लेयर में कितना टेम्परेचर होगा, कितनी डेंसिटी होगी, एंड even the magnitude of earthquake waves. The density of the rock materials, its thickness and pressure also increase with depth. From the information obtained, the scientists have divided the earth into 3 consecutive layers of varying thickness known as the crust, the mantle and the core. And according to this information, by the density of materials and magnitude of earthquake waves, many scientists divide the earth into 3 layers. First is crust, second is mantle and third is core. Our next topic is structure of the earth, and in this particular structure we are going to learn about the 3 layers of the earth. And first layer is crust. It is also known as lithosphere. The crust is the outermost layer. Its thickness varies between 5 to 8 kilometers under the ocean floors to 35 kilometers under the continental masses. मीन्स वो स्टूडेंट ओशन फ्लोर जो है, मतलब कि ओशन बेड जो है, ओशन और रिवर्स के अंदर जो अर्थ लेयर होता है लैंड का, वो फर्स्ट लेयर कितने डीपनेस में होता है? अबाउट 5 to 8 kilometers. बट इन द कॉन्टिनेंटल masses मीन्स ऑन द नॉर्मल लैंड इट इज़ अबाउट 35 kilometers. Silica and alumina are the main minerals constituents of the continental masses and it is called Sial. This is of continental, means continental land जो होता है, लिथोस्फीयर लेयर जो कॉन्टिनेंट पे होता है, नॉर्मल लैंड जो होती है उसमें कौन से मिनरल्स अवेलेबल होते हैं? दैट इज सिलिका एंड एल्यूमिना. दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज Sial. Silica Si, alumina Al, that is SiAl. The oceanic crust is denser than the continental crust. The oceanic crust, why it is denser than the continental crust? Because the water is available over there, and because of that
water, the land absorbs too much water in it, and that is why only it becomes more denser. The oceanic crust is called seema. Why it is called seema? Because it is made up of silica, that is Si, and magnesium, that is Ma. Si means silica, Ma means magnesium, that is why it is known as seema. The average density of the crust is 3 gram per cubic किलो सेंटीमीटर. मीन्स अगर 1 सेंटीमीटर का जो क्यूब एरिया होता है ओशनिक क्रस्ट का, उसकी डेंसिटी कितनी होगी? तो दैट इज ऑफ 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सेकेंड लेयर ऑफ द अर्थ, दैट इज mantle, or it is also known as mesosphere. The mantle, which is the second layer, extend up to a depth of 2900 km below the crust. Means crust layer extended up to 35 km, and after that 35 km area, the next layer that going to be started, that is the mesosphere, or as you can say mantle, and that is extended up to 2900 km. It is made up of dense and heavy mineral materials like iron, magnesium and silica. It consists of 2 layers. Now in the mantle layer, it is again divided into 2, that is the upper mantle layer and the lower mantle. The average temperature of upper mantle is 870 degrees Celsius. Means the upper layer of mantle, that is the 870 degrees Celsius, and when you are going deep inside the earth, that is the lower mantle layer, it consists of 2200 degree Celsius, and in the upper mantle the rocks are in semi-solid state, means not in that much molten state, and it is in a solid state in the lower mantle area. The average density of the mantle is 3.5 gram to 5.5 gram per cubic centimeter. Now we are going to learn about the last layer, that is the core, or you can say that barosphere. The innermost layer is called the core. It has the thickness of about 3500 km, and this too is divided into 2 layers, the outer core and the inner core. Like the mantle layer, it is also divided into 2. First is outer core and second is inner core. While the temperature of outer core, what is the temperature of outer core layer? That is the 2200 degrees Celsius, and when we are going in the deepness of the earth, that is most inner layer of the earth, that is the inner core, and the temperature there is 5000 degrees Celsius. Now you student, you can see here that as we are going downward side of the, as we are going deep inside the earth, the temperature is increases, right? You can see here in the upper mantle it is 870 degrees Celsius. When we are going down in the lower mantle, it is 2200 degrees Celsius. In the outer core, it is 2200 degrees Celsius, and we are going deep inside in the inner core, it is 5 degrees Celsius. And this layer is also called knife, N-I-F-E. Ni means what? Nickel, and Fe means iron, means we can found minerals, or you can see materials like nickel and iron. The average density of the core is between 3.5 gram to 5.5 gram per cubic centimeter. And you can see here the temperature increases at the rate of 1 degree Celsius for every 32 meters of the depthness. That is what we learned here in our first most introduction paragraph, that when we are going deeper, 1 degree Celsius increases for every 30 to 35 meters. Now what is written down over here? In the core,
द टेम्परेचर एट द कोर बीइंग एक्सट्रीमली हाई, मतलब कि यहाँ पे टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द मैटर इज इन अ मॉल्टन स्टेट, मतलब कि वहाँ पे जितने भी रॉक्स या जितने भी मिनरल्स मटेरियल्स होंगे वो कैसे फॉर्म में होंगे, तो वो मॉल्टन फॉर्म में होंगे, एंड दैट मॉल्टन फॉर्म इज नोन एज मैग्मा. This red molten magma erupts from the interior of the earth through the volcanoes and is called lava. And we know that lava eruptions, right, volcano eruptions, how it forms. So when the temperature increases, हमें ये वाटर साइकिल पता है, राइट. वाटर साइकिल में क्या होता है, तो जैसे ही टेम्परेचर हाई होता है तो वाटर क्या हो जाता है, वार्म होता है और वो एवोपरेट होना स्टार्ट होता है, और ऐसा वाटर वेपर वो राइज होता है. लाइक दैट ओनली जो भी मॉल्टन मैग्मा है वो इनसाइड द अर्थ जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर के वजह से वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, वो धीरे धीरे राइज होना स्टार्ट हो जाता है. मतलब कि वो मॉल्टन मैग्मा राइज होता है, और वो जैसे जैसे राइज होगा तो वो टेम्परेचर के वजह से राइज होके फिर क्या हो जाएगा, तो अर्थ का जो सबसे अपर मोस्ट लेयर होता है दैट इज द क्रस्ट, वो क्रस्ट को ब्रेक डाउन करके वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, राइट. सो दैट एक्टिविटी इज नोन एज वॉल्केनो इरप्शन. मतलब कि जो मॉल्टन मैग्मा है वो एवोपरेशन प्रोसेस की वजह से, मतलब कि उसका जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर की वजह से राइज होता है, और वो राइज होके अर्थ के सरफेस पे आने की कोशिश करता है, और वो फर्स्ट लेयर को क्रैक करके बाहर आता है. तो दैट प्रोसेस इज नोन एज वॉल्केनो, एंड दैट इज द lava. The material that is come out of the earth, that is known as lava. Recent studies have suggested that the inner core is actually found in a solid state due to the pressure of the above layers. अभी रिसेंटली स्टडी में क्या जाना गया है स्टूडेंट, तो हमने अभी क्या पढ़ा, जो इनर कोर है उसमें जो भी मटेरियल होता है वो कैसा होता है, मॉल्टन होता है. बट अभी जो रिसर्च हुआ है उससे क्या पता चला है, तो वहाँ पे जो भी मटेरियल्स है वो कैसे फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है. क्यों वो सॉलिड फॉर्म में है, क्योंकि उसके ऊपर जितने भी लेयर्स है, क्रस्ट लेयर है, मेंटल लेयर है, एंड कोर आउटर कोर लेयर है, वो लेयर के प्रेशर के वजह से वो जो भी मटेरियल्स है वो कैसे फॉर्म में रहते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में ही रहते हैं. दैट इज द करंट स्टडी. Now we are going to learn about the materials of the earth crust. What are the materials? We learn here about in the three layers, that materials like nickel and materials like magnesium, silica, right? That is available in the three types of layers of the earth. So what are the materials in the earth crust? Crust मतलब कि जो first most अपर मोस्ट जो लेयर है अर्थ का क्रस्ट, उसमें हमें कौन से मटेरियल्स फाइंड आउट होते हैं. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द मटेरियल दैट इज रॉक. All solid materials of the earth crust, whether hard or soft, that make up the earth's crust are called rocks. मतलब कि जो फर्स्ट लेयर है, अपर मोस्ट लेयर जो है, उसमें मोस्ट ऑफली कौन सा मटेरियल हमें फाइंड आउट होता है, दैट इज द रॉक. एंड द रॉक इज अ मटेरियल दैट इज इन द सॉलिड फॉर्म, और यू कैन से इट इज हार्ड और सॉफ्ट. They are of different composition, sizes, textures and color. As you can see in this particular picture, you can see different types of rocks here. They are of different composition, मतलब कि अलग अलग मिनरल्स से वो बनते हैं, राइट. जैसे हमने पढ़ा सिलिका, मैग्नीशियम, आयरन, तो वो अलग अलग मिनरल से फॉर्म होते हैं, तो उनके साइजेस भी डिफरेंट होते हैं और उनके कलर्स भी डिफरेंट होते हैं. Rocks are generally solid masses but also include loose materials such as sand and silt. Sand means what? We all know about sand means a small rocks, right? And silt means what? Clay. So rocks कैसे फॉर्म में होते हैं? मोस्ट ऑफ दे वर इन द सॉलिड फॉर्म, बट there are other soft forms that are the sand and silt.
They are made up of one or more minerals that I earlier explained you that of any kind of mineral that are available in the crust layer, and we learned that in the crust layer two types of minerals are there. One is silica and alumina, that is in the continental masses, and silica and magnesium, that is in the oceanic crust. दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन. जैसे वाटर का केमिकल कंपोजिशन क्या है, H2O मीन्स टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, राइट. तो उससे हमें पता चलता है कि वाटर फॉर्म होता है. बट रॉक्स में ऐसा कोई भी परफेक्ट कंपोजिशन नहीं होता है. वो कोई भी मिनरल्स से सॉलिड फॉर्म कर सकता है. Now we are going to learn about the minerals. What do you mean by minerals? Minerals क्या होते हैं स्टूडेंट? तो वो substances होते हैं जिससे क्या फॉर्म होता है, रॉक फॉर्म होता है. See, minerals are substances which occur in rocks. Their main characteristics are as follow. They have a definite chemical composition. Means here we learn about, देखो ये आयरन, मैग्नीशियम एंड सिलिका, तो उससे एक क्या होता है, तो एक केमिकल फॉर्म होता है, राइट. निकल एंड आयरन, तो उससे कौन सा केमिकल फॉर्म होता है, नाइफ. सो वो क्या है, केमिकल कंपोजिशन है. तो मिनरल्स वो केमिकल कंपोजिशन से फॉर्म होते हैं. दे हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन. ईच मिनरल कंटेन्स टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस कॉल्ड elements. They provide us metals and chemicals. They are non-living solid substances. But of course, non-living solid substances, now they are provide us metal and chemical means what? Metal means what? Iron, gold, silver, copper, lead, zinc, right? तो वो हमें metals भी provide करते हैं और chemicals भी provide करते हैं. A rock in which a particular mineral is found in a large percentage is called an ore. अगर कोई रॉक है फॉर्म हुआ है, वो मिनरल से फॉर्म हुआ है. अगर कोई भी पर्टिकुलर मिनरल ज़्यादा पोर्शन में रॉक में अवेलेबल है तो दैट इज नोन एज ओर. मिनरल्स आर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू, मतलब कि उनकी इकोनॉमिक वैल्यू ज़्यादा होती है. मतलब कि अगर हम उसे सोल्ड करेंगे तो हमें ज़्यादा अमाउंट मिल सकता है. एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट, और उसके वजह से बहुत सारे मॉडर्न डेवलपमेंट्स हो रहे हैं. दे आर डिवाइडेड इनटू मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स. नाउ स्टूडेंट्स, मिनरल्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. वन इज मेटालिक मिनरल एंड सेकेंड इज नॉन मेटालिक मिनरल. First we are going to learn about the metallic minerals. Metallic minerals, these are metallic in form and found in igneous and metamorphic rocks. Types of rocks we are going to learn in this particular chapter only. So you got to know about what are igneous and metamorphic rocks later on. Examples of metallic minerals are iron, gold, silver, copper, lead, zinc, etc. And what are non-metallic, मतलब कि उसमें कोई मेटल अवेलेबल नहीं होता है. These minerals are associated with sedimentary rocks. There is also we are going to learn. Examples of these minerals are clay, sulfur, coal, पेट्रोलियम, सॉल्ट एक्सेट्रा. स्टूडेंट, व्हाट इज नॉन मेटालिक? नॉन मेटालिक का मतलब क्या होता है कि वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होता है. वो हार्ड या सॉफ्ट दोनों फॉर्म्स में हो सकता है, राइट. On the basis of their formation, the rocks can classified into three types. Now we are going to learn about the types of rocks. First is igneous rock, sedimentary rock. Now first we are going to learn about the igneous rocks. The term igneous is derived from the Latin word that is ignis. Ignis means what, student? Ignis means fire. These rocks are formed by the cooling of the molten magma inside the earth crust or on the earth's surface. Now you can see here, see in this diagram, molten magma मतलब कि इनसाइड द अर्थ इनर मोस्ट लेयर में जो भी मैग्मा होता है, मतलब कि जो भी मटेरियल्स मॉल्टन स्टेट में होते हैं, वो मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया कि वो टेम्परेचर की वजह से
क्या होते हैं, राइज होके अर्थ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और वो अर्थ के क्रस्ट को क्रैक करके बाहर निकलते हैं। और बहुत सारा मॉल्टन मैग्मा कैसा होता है, तो वो राइज तो होता है पर वो बाहर नहीं निकल पाता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ क्रस्ट, तो वो इनसाइड द अर्थ ही रह जाता है, राइट। अगर मॉल्टन मैग्मा बाहर इरप्ट हो जाएगा आउटसाइड द अर्थ, इफ इट इज इरप्टेड, सो इट गोइंग टू बी कूल डाउन स्लोली, मतलब कि वो धीरे धीरे कूल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। और वो कूल डाउन होके क्या होगा, सॉलिड फॉर्म बन जाएगा, क्योंकि वो आउटसाइड आ गया है ना, आउटर लेयर में आ गया है, तो उसकी वजह से वो कूल डाउन होके कौन सा फॉर्मेशन करेगा, तो सॉलिड फॉर्म करेगा। तो उस सॉलिड फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, इग्नियस रॉक। और यू कैन से अर्थ के इनसाइड में ये देखो अपर लेयर में आके वो क्या हो गया है, तो राइज नहीं हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे आके वो फिक्स हो गया है, तो यहाँ पे भी वो स्लोली क्या होगा, कूल डाउन होगा, और कूल डाउन होके सॉलिड फॉर्मेशन करेगा, तो दैट इज द igneous rocks. Now there are two types of igneous rock. First is extrusive igneous rock and second is intrusive igneous rock. What is extrusive? Means जो बाहर अर्थ के आउटसाइड क्रस्ट पे क्या हो रहा है, इरप्ट होके कूल डाउन हो रहा है और फॉर्मेशन कर रहा है, तो दैट इज द एक्सट्रूसिव। और इंट्रूसिव मीन्स व्हाट, इन मीन्स इनसाइड द अर्थ, इंट्रूसिव मीन्स व्हाट, तो अर्थ के इनसाइड वो कूल डाउन होके रॉक फॉर्म कर रहा है, तो दैट इज द इंट्रूसिव igneous rock. Now you can see here, please listen to very carefully so you can understand by reading only. What is written down here? The process takes thousands of years. When the molten lava comes on the earth's surface and cool down rapidly on the crust, it forms extrusive igneous rock. Such rocks have a very fine grained structure. When molten magma cool down deep inside the earth crust, the cooling process is slow. इनसाइड द अर्थ होगा तो वो कूलिंग प्रोसेस कैसा होगा, स्लो होगा। अगर अर्थ के आउटर लेयर में आके वो कूल डाउन हो रहा है तो वो कूल डाउन जल्दी होगा। क्यों? क्योंकि इनसाइड द अर्थ टेम्परेचर कैसा होता है, हाई होता है, तो कूलिंग प्रोसेस इतना फास्ट नहीं हो पाएगा। द कूलिंग प्रोसेस इज स्लो एंड द रॉक सो फॉर्म हैव लार्ज ग्रेन्स, दिस आर कॉल्ड intrusive igneous rocks. Now we are going to learn about the characteristics of the igneous rock. Igneous rocks are hard and compact. Why it is hard? Because it is forming solid form by cooling down process. Second is they are impervious rocks and do not contain the remains of animals or plants, that is the fossils. मतलब कि ये तो बहुत ही इनर कोर में जो मॉल्टन मैग्मा है वो राइज होके बाहर आ रहा है ना, तो इनसाइड द अर्थ जो इनर कोर है उसमें कोई भी डेड एनिमल या डेड प्लांट्स के रिमेन्स नहीं होंगे, मीन्स फॉसिल फ्यूल उसमें नहीं अवेलेबल होगा। Third point is they are also known as primary rocks. Why it is also known as primary rocks? Because other types of rocks are formed from these rocks. मतलब कि जो दूसरे रॉक्स है, सेडिमेंटरी रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, वो कहाँ से फॉर्म होते हैं, तो वो इग्नियस रॉक में से फॉर्म होते हैं। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी रॉक्स। एंड हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इग्नियस रॉक, दैट इज द बेसल्ट, ग्रेनाइट, डोरोराइट, etc. Now we are going to learn about the sedimentary rocks. Now students, it is also very much important. Sedimentary rocks कैसे फॉर्म होते हैं, तो ये जो igneous rock होते हैं वो क्या होते हैं, तो अगर स्ट्रॉन्ग विंड वहाँ पे ब्लो डाउन हो रहा है तो वो रॉक क्या होगा, स्ट्रॉन्ग विंड के वजह से वो क्रैक होना स्टार्ट हो जाएगा और वो क्रैक होके स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में बन जाएगा। तो वो क्या है, दैट आर द सेडिमेंटरी रॉक्स। नाउ यू कैन सी हियर, rocks are constantly broke down. Which rocks? Igneous rocks are constantly broke down. कैसे वो ब्रोक डाउन होते हैं, इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट, मतलब कि स्मॉल पार्टिकल्स में, एंड कैरिड अवे बाय विंड, वाटर और आइस, एंड डिपॉजिटेड इधर ऑन द सी बेड और ऑन
लैंड, मतलब कि विंड के वजह से, वाटर के वजह से और आइस के वजह से वो क्या होते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होते हैं, ब्रेक डाउन होके स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स बन जाते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होते हैं। वो मूव होके जहाँ पे डिपॉजिट होते हैं, वो कहाँ कहाँ पे डिपॉजिट हो सकते हैं, तो सी बेड में डिपॉजिट हो सकते हैं और लैंड पे। These rocks are generally formed underwater. These smaller particles are called sediments. मतलब कि जो small particles break down हो जाते हैं rocks के, वो small particles को हम क्या बोलेंगे, sediments बोलेंगे. These sediments are compressed, hardened and cemented together to form layers of rocks called sedimentary rocks or stratified rocks. Now students, sedimentary rocks is also known as stratified rocks. और ये जो स्मॉल सेडिमेंट्स होते हैं, अगर हम उसे कंबाइन करेंगे और उसे हार्ड सॉलिड फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो जो रॉक फॉर्म होता है, दैट इज द sedimentary rock. Sandstones and limestones are two examples of sedimentary rocks. Now inside. The word sedimentary originates from a Latin word sedimenter, which means settle down. सेटल डाउन का मतलब क्या है, तो जो भी इग्नियस रॉक है वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं स्मॉल पार्टिकल्स में और वो कहीं पे जाके डिपॉजिट हो रहे हैं, मतलब कि सेटल डाउन हो रहे हैं. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सेडिमेंटरी रॉक्स. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ sedimentary rocks. Sedimentary rocks are made up of particles of various sizes and deposited in horizontal layer वन ओवर द अदर. मतलब कि वो एक दूसरे पे डिपॉजिट होते हैं. मतलब कि अगर स्मॉल पार्टिकल्स कहीं पे डिपॉजिट हुए हैं, तो दूसरे स्मॉल पार्टिकल्स अगर वाटर के थ्रू डिपॉजिट हो रहे हैं, तो वो उनके ऊपर एक और लेयर बनाएंगे. ऐसे ही वो लेयर्स फॉर्म होते जाते हैं और जो बिग रॉक फॉर्म होता है वो स्मॉल पार्टिकल्स की वजह से, दैट इज द सेडिमेंटरी रॉक्स. दिस आर सॉफ्टर देन इग्नियस रॉक्स. मतलब कि जो सेडिमेंटरी रॉक्स होते हैं वो कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, सॉफ्ट होता है. दिस रॉक्स कंटेन, जो इग्नियस रॉक थे वो फॉसिल फ्यूल कंटेन्स नहीं करते थे, पर सेडिमेंटरी रॉक्स कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. व्हाई इट इज कंटेन फॉसिल्स, मैंने अभी आपको बोला कि वो तो इग्नियस रॉक ही होता है जो ब्रेक डाउन होके सेडिमेंट में बन जाता है, राइट. तो इसमें कैसे डेड एनिमल के पार्ट्स और प्लांट्स के पार्ट्स आ जाएंगे, तो बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन प्रोसेस, मतलब वाटर, विंड, किसी भी थ्रू अगर वो फ्लो डाउन होके वो कहीं पे डिपॉजिट हो रहे हैं, तो वो तो लैंड के थ्रू ही डिपॉजिट होंगे कि नहीं होंगे. और लैंड पे डेड एनिमल्स या डेड प्लांट्स के हमें थोड़े थोड़े पार्टिकल्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, तो वो भी उनके साथ फ्लो होंगे और वो भी डिपॉजिट होंगे. दैट इज वाई सेडिमेंटरी रॉक्स में फॉसिल फ्यूल्स अवेलेबल होते हैं. दिस रॉक्स कॉन्स्टिट्यूट 70% ऑफ ऑल रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस. मतलब कि हमें जितने भी रॉक्स देखने को मिलते हैं नॉर्मली लैंड पे, उसमें मोस्ट ऑफ कौन से रॉक्स होते हैं, सेडिमेंटरी रॉक्स होते हैं. It is interesting to note that all fossil fuels like coal, petroleum are found trapped in the layer of these rocks. मतलब कि हमें कोल और पेट्रोलियम जो है वो मोस्ट ऑफली कौन से रॉक्स में से मिलता है, तो सेडिमेंटरी रॉक्स में से. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द मेटामॉर्फिक रॉक्स. Now what is metamorphic rocks? Certain igneous and sedimentary rocks get changed due excessive heat and pressure inside the earth and undergo a complete change in their form and characteristic. मतलब कि igneous rock और sedimentary rock के combination को हम क्या बोलेंगे, metamorphic rocks. द चेंज में अकर इन देयर कलर, टेक्सचर. मतलब कि वो जो चेंजेस होते हैं, मतलब कि इग्नियस रॉक और सेडिमेंटरी रॉक का जो मिक्सचर होता है और उनके वजह से जो चेंजेस होते हैं, वो कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं, तो उनके कलर में चेंजेस हो सकते हैं, इन देयर टेक्सचर्स, हार्डनेस, हार्ड हो सकते हैं, सॉफ्ट हो सकते हैं, मिनरल कंपोजिशन. सच रॉक्स आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड दिस प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. Marble, slate, gneiss are a few examples of such rocks. Limestones change into marble. Limestone कौन से टाइप का रॉक है,
Which type of rock is limestone? So limestone is a sedimentary rock, right? तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है ये प्रोसेस की वजह से मार्बल में, एंड सिल चेंजेस टू स्लेट एंड ग्रेनाइट टू नीस. दिस आर सम एग्जांपल्स एंड चेंजेस ऑफ द metamorphic rocks. Now chief characteristics are metamorphic rocks are hard and take a long time in its formation. मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 100 of years, thousands of years लगते हैं उनको फॉर्म होने में. They were harder than other rocks. मतलब कि वो igneous और sedimentary rocks से भी हार्ड होते हैं and have a high specific gravity. Now student, we are going to learn about the rock cycle. You can see here in the rock cycle, I can explain you the whole rock cycle through this. Now I already explained you what is the volcanic eruption. Again I am going to repeat it. In the innermost layer of the earth, molten magma is there. Because of the high temperature inside the earth, that molten magma rises above, and what it does, it cracks the crust layer and come out of the earth. That is the volcanic eruption. अभी उसमें क्या वो इरप्ट हो रहा है, तो मैग्मा बाहर आ रहा है, अर्थ के सरफेस पे आ रहा है, और वो जो मैग्मा है वो स्लोली क्या होगा, तो इट कूल डाउन्स, राइट, इट कूल डाउन्स एंड फॉर्म द इग्नियस रॉक. वो कूल डाउन होके क्या फॉर्म करेगा, वो हमने लर्न किया इग्नियस रॉक. अभी हमने सेकंड क्या लर्न किया, तो ये जो इग्नियस रॉक होते हैं वो वाटर, विंड या आइस के वजह से स्मॉल सेडिमेंट्स में क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं. मतलब कि जो बिग रॉक होता है वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होके स्मॉल पार्टिकल्स बन जाते हैं. दैट इज नोन एज सेडिमेंट. और वो सेडिमेंट वाटर, विंड या आइस के वजह से कहीं पे डिपॉजिट होते हैं, और वो लेयर एक के ऊपर एक डिपॉजिट होके जो रॉक फॉर्म होता है, दैट इज द सेडिमेंटरी रॉक. अभी ये जो सेडिमेंटरी रॉक है वो क्या हमने पढ़ा, इग्नियस रॉक और सेडिमेंटरी रॉक का जो फॉर्मेशन है उनके कॉम्बिनेशन मिक्सचर के वजह से जब ये दो रॉक्स मिक्स होंगे एक दूसरे के साथ और चेंजेस होगा, कहाँ पे चेंजेस होगा, इनसाइड द अर्थ. ये जो चेंजेस होते हैं वो चेंजेस के वजह से जो रॉक फॉर्म होता है दैट इज द मेटामॉर्फिक रॉक. और ये रॉक कहाँ पे होंगे, बट ऑफ कोर्स इनसाइड द अर्थ, क्योंकि ये चेंजेस कहाँ पे हो रहे हैं, अर्थ के इनसाइड हो रहे हैं. तो अर्थ के इनसाइड होंगे तो वो रॉक फॉर्म होगा, और वो ही रॉक इनसाइड द अर्थ जो टेम्परेचर है उसके वजह से क्या होने लगेगा, मेल्ट होने लगेगा. तो वो क्या बन जाएगा फिर, मैग्मा. और वापस से ये सारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी. मैग्मा टेम्परेचर के वजह से राइज होगा और उसके वजह से वॉल्केनिक इरप्शन होगा. इरप्शन के वजह से मैग्मा बाहर आएगा, कूल डाउन होगा, वापस इग्नियस रॉक फॉर्म होगा, वापस वो ब्रेक डाउन होके सेडिमेंट्स बन जाएगा. सेडिमेंट्स डिपॉजिट होंगे तो वो क्या बन जाएंगे, सेडिमेंटरी रॉक्स बन जाएंगे. उनके दोनों के मिक्सचर की वजह से इनसाइड द अर्थ कौन सा रॉक फॉर्म हो सकता है, दैट इज द मेटामॉर्फिक रॉक. और वही मेटामॉर्फिक रॉक वापस टेम्परेचर की वजह से मेल्ट होके क्या बन जाएगा, मैग्मा बन जाएगा. तो दिस इज आवर रॉक साइकिल and that is only written down over here, so please listen to it very carefully. Rocks also undergo a cycle of transformation. Molten magma cools down and solidified to form igneous rock. These are broken down, transported and deposited to form sedimentary rocks. Both igneous and sedimentary rocks change to metamorphic rocks due to extreme heat and pressure. Extreme heating will lead to melting of rocks forming new magma. This molten magma can again cool down and solidify into igneous rock. The entire process is called the rock cycle. Now we are going to learn about the usefulness of rocks. Rocks कैसे use होते हैं? They were used in the construction of roads and buildings. It's a common use. They are a storehouse of fossil fuels like coal and petroleum. हमने सेडिमेंटरी रॉक्स में पढ़ा कि वहाँ पे जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा पोर्शन में अवेलेबल होते हैं. सो व्हाट वी लर्न हियर, तो सेडिमेंटरी रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स आर द स्टोर हाउस ऑफ द fossil fuels.
Chemicals found in certain rocks are raw materials for making fertilizers. मतलब कि रॉक्स के अंदर जो मिनरल्स अवेलेबल होते हैं उनकी वजह से क्या हम बना सकते हैं या फॉर्म कर सकते हैं तो फर्टिलाइजर्स. रॉक टाइप ऑफ एनी एरिया डिटरमाइन द सॉइल एंड ड्रेनेज पैटर्न ऑफ द एरिया. मतलब कि जहाँ पे रॉक्स होते हैं जो एरिया में, वो रॉक के फॉर्मेशन से हमें पता चल सकता है कि वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम कैसा बन सकता है या वहाँ पे सॉइल कैसी होगी, फर्टाइल होगी या नहीं होगी, एक्सेट्रा.